Hello students, how are you all? Today we are going to start chapter 4, which is Know More About MS Windows 7. So let's get started. Introduction. MS Windows is an operating system, a system software that acts as an interface between the computer hardwares and the user is known as an operating system. Okay, so MS Windows क्या है? It is an operating system जो user और computer के बीच में work करता है और इसे easy बनाता है. Okay, it also manages the resources of the computer system and does many other things. In previous classes, children, we have learned how to do different tasks in Windows. Different operations on files and folders have also been performed. Different applications like Paint, MS Word, etc. have also been introduced to you. Now let us learn something more about Windows 7. So students, Windows 7 is very popular and it is very important to use. So nowadays we use Windows 7, okay, and it is an operating system. And student, operating system for computers like a brain. Okay, suppose we how important human brain is for human being, right? As it is, operating system is a similar important for computer. Desktop background. Windows desktop is the screen that appears when you switch on the computer. Okay, जब भी आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करोगे, okay, so आपको सबसे पहले क्या दिखेगा? डेस्कटॉप बैकग्राउंड. So that is called desktop. Desktop is the operating Windows operating system. Desktop is the main screen in Windows. Shortcut icons for a program can be placed here, which take us directly to that program. We can also add a picture on the desktop. Okay, so desktop पे हम क्या देखते हैं? बहुत सारे icons देखते हैं. Okay, और हम कोई भी place desktop पे कोई भी picture add कर सकते हैं. Okay, we can change background of our desktop and we can also add a picture on the desktop to be displayed on full screen to enhance the beauty of the screen. This picture is also called wallpaper. Okay, as it is we change wallpaper in our phone. Okay, just like we can change wallpaper on the computer. All icons are actually present on the foreground for the desktop background, which is a colorful picture or a simple single color screen. Okay, so this is about desktop background. Now changing the desktop background. Okay, how to change desktop background? हम कैसे change कर सकते हैं? So you can change the desktop background of your computer to give a new look. To change the desktop background, the following steps should be taken up. ओके आपको ये स्टेप्स फॉलो करना है कि हम हमारे डेस्कटॉप का कंप्यूटर पर बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं. स्टेप 1. राइट क्लिक एट एनी एम्प्टी एरिया ऑन द डेस्कटॉप एंड क्लिक द पर्सनलाइज ऑप्शन. ओके, आप डेस्कटॉप पे कहीं भी माउस से राइट क्लिक करोगे सो एक ऑप्शन विजिबल होगा जिसे हम बोलते हैं पर्सनलाइज ऑप्शन. ओके, नाउ यू नीड टू क्लिक ऑन दैट ऑप्शन. Step 2 is click the desktop background option. You get a new window. Okay, so personalize option पे जैसे ही आप आओगे, आप जैसे ही क्लिक करोगे, so click the desktop background option visible होगा जिसे आपको क्लिक करना है. Select any option from picture location, for example Windows desktop background. Okay, so you can select any picture whichever will appear whenever you will click on desktop background. For example, Windows desktop background. Okay. Step 4 is choose the picture of your choice
you can adjust the position of your picture using picture position option. Okay, so you need to, in the step 4, what you need to do, you need to choose any picture of your choice and you need to आपको एडजस्ट करना है पिक्चर अपने अकॉर्डिंग डेस्कटॉप पे. ओके, एंड लास्ट स्टेप इज क्लिक द सेव चेंजेस. ओके, जब भी आप सिलेक्ट करोगे पिक्चर एक ऑप्शन अपीयर होगा दैट इज सेव चेंजेस बटन. सो दैट ऑप्शन यू नीड टू क्लिक ऑन दैट ऑप्शन. The desktop background of your computer changes according to the selected options. Now students, next is let us know about screensaver. Okay, so what is a screensaver? Okay, you all have phone. Okay, you all use phone, not have, so that you might have seen बहुत सारे पिक्चर्स, बहुत सारे वॉलपेपर ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं हमारे फ़ोन में. ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड स्क्रीन सेवर. व्हेन कंप्यूटर आर नॉट इन यूज एंड लेफ्ट आइडियल फॉर अ सर्टेन टाइम, सम मूविंग पिक्चर्स ग्राफिक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन. ओके, सो कंप्यूटर पे भी ऐसा होता है, जब भी हम उसे ऑन करते हैं बहुत सारे ग्राफिक पिक्चर्स अपीयर होते हैं और मूव करते हैं स्क्रीन पे. ओके, वन बाय वन. सो विच आर नोन एज स्क्रीन सेवर. As soon as mouse is used or key is pressed on keyboard, the desktop appears once again on the screen. Okay, जब भी आप माउस और की को प्रेस करोगे तो अगेन डेस्कटॉप अपीयर हो जाएगा स्क्रीन पे. A screensaver is a program that displays moving pictures or graphics on the computer system. It starts when the computer system is left idle for some time without performing any operation. Okay, so this is about screensaver and it is related to graphics or moving pictures. Okay, so students, how to change the screensaver? We have learned how to change desktop background. Now we can change screensaver. Okay, so let's get started how to do it. The following steps are taken in order to change the screensaver. Step 1. Right click at any empty area on the desktop and click the personalize option. So for this also you need to right click on the any empty area on the desktop. Okay, at any empty area on the desktop you need to right click and click the personalize option. Step 2 is click the screensaver option. A new window appears. Okay, so personalize option पे आप क्लिक करोगे, फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन सेवर, आपको उस पर क्लिक करना है. सो विंडोज अपीयर होगी. Step 3 is select any screensaver from the screensaver list box. If you want to see the preview of the selected screensaver on the computer screen, just click on the preview button. Okay, so आपको screensaver के बहुत सारे पिक्चर्स दिखेंगे, आपको लिस्ट बॉक्स मिलेगी, आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो. इफ़ यू वांट टू सी मोर जस्ट क्लिक ऑन द प्रीव्यू बटन. Step 4 is to set the ideal item of computer after which the screensaver starts. Set the number of minute in the wait box. So for that you just need to आपको वेट बॉक्स में नंबर सेट करना है कि आपको कितने कितने मिनट में अपना जो स्क्रीन सेवर है वो चेंज करवाना है. ओके, सो यू कैन राइट 6, 7 और 1 मिनट. ओके, उतने मिनट में आपका जो स्क्रीन सेवर है वो चेंज होता रहेगा. ओके, देन स्टेप 5 इज यू नीड टू क्लिक ऑन दी अप्लाई बटन. ओके, अप्लाई बटन पे क्लिक करना है. देन स्टेप 6 इज click the OK button. That's all. Okay, this is about how can we change the screen saver. So the screen saver of your computer changes according to the selected option, and the screen saver starts when the system remains idle
for the numbers of minutes specific in the wait box. So students, I hope you have learned about today desktop background and screensaver.